अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ CS201 कंप्यूटर साइंस के MCQs। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन है, here is the code is given below, you have to identify the problem in the code while into I is less than 10 and I is greater than 24। तो ये क्या कहना चाहता है? पहले क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया तो हम इसको छोड़ देते हैं, दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। Which of the statement given below is equivalent to sum plus equal j into j। तो इसके बाद आपका जो आंसर है sum equal to sum plus j into j, ये आपका आंसर है। अगला है all elements of an array must be of same data type। In C/C++, null character is represented by /n। The dynamic memory allocation uses memory from the heap. When a value is referred by a normal variable, then it is known as direct reference. The address operator AND is used with a variable. A variable declared inside a code block becomes the local variable for the block। ये कुछ सही नहीं नज़र आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं। In C/C++, streams are the doors through which data can enter and come out of a program. A file name includes a primary name and an optional period with an extension. Okay. The operator used for casting in C is standard cast operator. Both handle and flush are manipulators. What will be the output of the following statements? Cout less than set base into 16 less than 52। तो आपके इसके पास आंसर आएगा 34। आई थिंक 52 में से 16 माइनस किया जा रहा है, तभी जाके आपका आंसर 34 आ रहा है। The return type of the operator function for less than operator is, तो ये क्या करेगा? रेफरेंस ऑफ ओ स्ट्रीम क्लास ओ स्ट्रीम एंड देगा। New operator allocates memory from free store and returns a pointer. A pointer returned by the new operator points to first memory address of memory chunks allocated by the new operator. A template function must have at least, इसका आंसर नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। What does STL stand for? STL का करेक्ट मतलब क्या है? तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। STL मीन्स स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। The appropriate data type to store the number of rows and columns of the matrix is int। अगर इसको स्टोर करना है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम? int। By using objects as class members, reusability is achieved। All data members of a contained object can be accessed from inside of the containing class। The normal source of CIN object is keyboard। The stream insertion and stream extraction operators are already overloaded for built-in data types। आगे हमारे पास जी, when an object of a class is defined inside an other class, then constructor of inner object will be called first। The order of destruction of an object is reversed as the construction order। A constructor will create a new object with a full copy of the other object, and this type of copy is known as, तो इसको क्या कहा जाएगा? डीप कॉपी। Assignment equal is the only operator that the compiler overloads for user defined data type।
A class member function defined for overloading a country operator takes how many arguments? तो इसका भी नहीं है दिया हुआ. Static allocation is less efficient than the dynamic allocation. बढ़ते हैं आगे की तरफ. Which of the following function call is correct for the function prototype? Default parameters into int equal a, int b equal to 7, and jar z into static. तो इसका आंसर क्या आएगा जी? डिफॉल्ट पैरामीटर्स ऑफ 5 आंसर आएगा. The region of memory available for allocation at runtime in C language is called heap memory, whereas in C++ is called for free store. The prototype of a friend function is a return. तो ये हो गया anywhere inside the class definition. Which one of the given option is correct prototype syntax for the overloaded proto operator के लिए? तो इसका आंसर आपका थर्ड वन, रिटर्न टाइप ऑपरेटर सिंबल पैरामीटर्स लिस्ट. ठीक है, आगे चलते हैं. द डिक्लेरेटर ऑफ प्लस मेंबर ऑपरेटर फंक्शन इज, तो इसके लिए क्या आंसर है जी आपका? क्लास नेम ऑपरेटर प्लस इनटू क्लास नेम RHS. आगे बढ़ते हैं. सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हेन एलोकेटिंग मेमोरी यूजिंग न्यू ऑपरेटर इज, तो ये आपके पास आंसर कंस्ट्रक्टर is called first before allocating memory. Individual characters in a string stored in an array can be accessed directly using array कौन सा जी? Subscript. Whenever we allocate any memory from the heap, then starting position of the block of the memory allocated is returned as an address that is kept in a pointer. Whenever we allocate any memory from the heap, then starting position of the block of the memory allocated is returned as the address that is kept a pointer. अगला है हमारे पास क्वेश्चन. कंस्ट्रक्टर इज a special function object or function called whenever we instantiate a object of a class. Which of the following function call is call by reference for the following function prototype? view id function into int static. तो इसके लिए function into and number इस्तेमाल होगा. अगला है हमारे पास जी, what is the highest legal index for the following array? int or array of 4. तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? 3, यानी कि एक नंबर कम करके बताना है. जब the following is the correct way to initialize a character array course with string programming. तो इसके लिए जो सही है, सबसे पहले course of 12 programming equal programming. अगला है हमारे पास using a segment of source code again by adding new functionalities with slight or no modification is termed as code reusability. ठीक है. अगला है हमारे पास इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट ऑल द लाइन्स बिफोर एरर एंड स्टॉप्स एट द लाइन व्हिच कंटेन्स द एरर. तो वो क्या होगा आपके पास जी? इंटरप्रेटर. Which of the following values are used in C++ to represent true or false, true and false? तो वो होगा 1 and 0. ट्रू के लिए 1 और false के लिए 0 इस्तेमाल होता है. When break statement is encountered in switch statement, it exits from switch statement.
ठीक है। अगला है हमारे पास व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ दिस सेगमेंट एंड अरे ऑफ 6 इक्वल टू 3 7 4 5 6 और एंड इनटू pt r1 इक्वल एंड अरे 1, फिर इसी तरह एंड ptr2 इक्वल एंड r ऑफ 4 एंड सी आउट लेस देन ptr2 ptr1। तो इसका आंसर आपके पास आएगा 2। इन सी प्लस प्लस इंटीजर कैलकुलेशन अकर्स इन डैश बाइट्स, तो ये होता है 4 बाइट्स के अंदर ही। इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन कॉलिंग इज लाइक अ सेंडिंग a or n dash to the object message to the object. The static data member of a class will be initialized within class. Whichever the following option is true about static data members of class, तो इसका आंसर नहीं है, तो ये बाकी हमारे पास है। तो ये आखिरी में आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ इसका। When a variable is defined as a static in a class, then only one copy is created for all objects of this class। ठीक है दोस्तों, अगर ज़्यादा लंबी वीडियो करता तो दोस्त हमारे ज़्यादा देखते भी नहीं है, तो इस वजह से इस वीडियो को यहाँ पे मैं एंड अप करता हूँ। मज़ीद इस तरह के हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।